Hello everyone. I hope you all are good and you all are solving questions, learning things. Let us solve this one and for that let us read the question. What is given in here? The projectile, sorry, heading projectile motion का है ऊपर, but this is a question of kinematics. Sorry. Sorry for that, but yeah, let's move ahead. Again, kinematics के अंदर ही projectile motion आता है. Maybe that is why this confusion occurred. But anyway, let's focus on the question. The velocity time graph for two particles, 1 and 2, moving along x-axis is shown in figure. Done है? So, दो particle का, particle 1 and 2 का graph plotted है v versus t का. Done है? Both were at origin at t equal to 0. So, x at t equal to 0 is 0 for both the particles. Done है? Now, ए में क्या कह रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ मोशन व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स एट व्हाट टाइम द सेपरेशन इज मैक्सिमम सो दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा उससे भी पहले चलो हम ग्राफ को रीड करते हैं अगर आप फर्स्ट पार्टिकल की बात करो तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन की बोथ आर इनिशियली एट द ओरिजिन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल सो u1 की अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू 0 देन दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड है ना एंड इफ यू टॉक अबाउट second particle at t equal to 0 it is starting from v equal to 0 also so that is 0. Now let's talk about their acceleration. So acceleration of first particle, acceleration will be constant because vt graph is a straight line graph and vt graph का slope क्या होता है? Acceleration होता है, right? So first particle के लिए line ये वाला है and this line has a negative slope because this is making an angle greater than 90 degree with the positive direction of x-axis. And इसका value कितना होगा slope का? देखो this is 4 and this is also 4. So 4 by 4 1. A1 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यानी कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन केस एंड सेकेंड केस में आप देख लो सेकेंड केस में क्या दिख रहा है बताओ सेकेंड केस में आई मीन अगेन दिस विल बी हैविंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अक्यूट एंगल बना रहा है सो tan ऑफ अक्यूट विल बी पॉजिटिव acceleration is positive but what's the value again this is 4 and this is 4 so value is same 1 meter per second square so first particle क्या है 4 meter per second के speed से start होता है and it starts retarding with the rate of 1 meter per second square and second particle is starting with v equal to 0 and it is accelerating with 1 meter per second square we are asked to calculate maximum separation value between them अब देखो ये कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो सपोज करो मैंने फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और एट एनी टाइम टी मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी x1 एट टी इक्वल टू 0 प्लस u1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज द जनरल फॉर्मूला वी यूज राइट सो x1t को आप x1 ले लो इक्वल टू दिस इज 0 राइट both are starting from the origin उसके लिए भी हम 0 ही लेंगे and first particle has initial velocity of 4 so 4t and it has retardation so minus half a का value minus 1 t square so this is what we are getting x1 का value 4t minus half t square what will be x2 x2 is your how much this is 0 initial speed is also 0 plus half t square now what will be the relative separation between these two I mean we are asked कि maximum separation उनके बीच में क्या होगा let's talk about separation between them as a function of time t so अगर आप निकालते हो x1 और x1 minus x2 या x2 minus x1 whatever you do अगर आप करते हो आपको क्या मिलने वाला है 4t minus half t square minus half t square so that will give you how much t square ठीक है this is and we have to maximize this separation so this separation as a function of time t हमें पता है let's call it s this is separation so if we have to maximize it what we will do ds by dt equal to 0 करो if we are getting single value here we are not going to do the second check ठीक है जो कि तुम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए करते हो सो लेट्स डिफरेंशिएट इट आई होप सब लोग अक्वेंटेड है इस चीज से कि हम फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं जैसे यहाँ पे हमें बताना है कौन से टाइम पे ये सेपरेशन मैक्सिमम है सो उस सेपरेशन का equation लिखो as a function of time t so for calculating maxima and minima first you do ds by dt equal to 0 and from here you will be getting values of t अगर तुम्हें दो values मिलते हैं ना t1 t2 suppose मिला then go for the second checkup
D2s निकाल लो, आई मीन सेकेंड डिफरेंशिएशन कर लो, एंड इफ एट T1 or T2 if it is greater than 0, then at T1 or T2 the function will be minimum, that is separation will be minimum, and if this value at any time T1 or T2 is less than 0, then it will be maximum. और अगर सिंगल वैल्यू आया है तो एक्चुअली उसी टाइम पे वही चीज होगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेकिंग, सो वी वोंट बी वेस्टिंग आवर टाइम. चलो डीएस वाई डी टी करते हैं. अगर डीएस वाई डी टी करोगे देन यू विल बी गेटिंग व्हाट, 4t, that is 4 minus t का स्क्वायर था ना, so that is 2t, and this is equal to 0. So 2t equal to 4, t equal to how much? 2 seconds. So at 2 seconds separation will be maximum. Now what will be the value of this separation? So s का वैल्यू कितना आया था? That was your 4t minus t का स्क्वायर. t का वैल्यू आप पुट कर दो, 8 minus t का स्क्वायर, that is 4. ठीक है, सो 4 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन. ठीक है, सो फर्स्ट केस इज सॉर्टेड. नाउ लेट्स डील विद द सेकंड वन. ड्रॉ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल फॉर द गिवन इंटरवल. अब देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बताना है ना. सबसे पहली चीज हमें हिंट तो ये दिया हुआ है, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. सो दोनों का ही ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज एक्स दोनों का इनिशियली 0 है. सो फ्रॉम हियर, and I have also solved previously graph question, and I have told you जब भी graph draw करना हो ना, you have some 2 or 3 options. either तुम यहाँ से straight line बना सकते हो, या ऐसे बना सकते हो, या ऐसे बना सकते हो. अब मुझे ये बताओ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा. स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व क्या देता है? वेलोसिटी. एंड ये स्लोप, आई मीन स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब स्लोप कांस्टेंट हो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो. लेकिन हमारे केस में दोनों ही बॉडीज का एक्सेलरेशन है, सो दिस कैनॉट बी द केस, राइट? सो इसको आप कट कर दो, इसको हटा दिया मैंने, ये किसी का भी नहीं हो सकता. सो इसको आप यहाँ से रिमूव ही कर दो. अब चलो चेक करते हैं इन दोनों में से 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, या फिर दोनों ही 1, कोई एक ही 1 हो, 1 2 दोनों होगा. लेट्स चेक. लेट्स फोकस ऑन 1 फर्स्ट. सो 1 के केस में तुम्हें क्या पता है? इट इज स्टार्टिंग इनिशियली विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. सो एट t इक्वल टू 0 it will have velocity equal to 4 meter per second, and gradually its velocity will decrease. So in xt curve, what you have to see, in xt curve you have to see dx by dt at t equal to 0 will be positive. First case positive, 4 meter per second value hoga. And second thing, dx by dt will keep on decreasing with time. डन है. अब आप दोनों दोनों ग्राफ को चेक करो. यहाँ पे देखो, ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को की बात कर रही हूँ, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ इनिशियली. इट लुक्स लाइक इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. स्लोप विल बिकम 0, एंड ग्रेजुअली इफ यू चेक ना, तो इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है. डन है, यानी कि इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है. इट कैन नॉट बी ट्रू फॉर फर्स्ट पार्टिकल. सो इस पे सेकेंड लाइन पे जाओ, आप सेकेंड कर्व पे जाओ. सो इस पे इनिशियली टेंजेंट बनाओ, इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, एंड दिस टेंजेंट थिंग, आप देखो एंगल धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे एंगल तुम्हारा और घटता जाएगा. और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है ना कि जब ये ऊपर आ रहा है तो ऑलमोस्ट टेंजेंट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सो ग्रेजुअली दिस slope thing is decreasing in case of this curve. So this can be the case for 1, and this will be the case for 2. कैसे? क्योंकि 2 के केस में इनिशियली वेलोसिटी इज 0, इनिशियली स्लोप इज 0 फॉर दिस कर्व, एंड ग्रेजुअली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. देखो इंक्रीज भी कर रहा है. डन है. ठीक है, so this will be 1, this will be 2. I hope you have understood this question. I hope I was able to explain all concepts in here. But if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.